Hello guys, assalamu alaikum. So yesterday I was discuss about biology portion past paper 2023. So today we are going to start physics portion 2012 DUHS and JSMU. ओके सो आज हमने जो है कुछ पास्ट पेपर आपके लिए लाए हैं। सो मुझे उम्मीद है आपको बहुत खुशी महसूस होगी कि आपकी जो है MDCAT आई मीन आपके बहुत करीब आ रही है। आई मीन उसमें कुछ ऐसे मैं कहूँ कि 2 माह कह सकते हैं हम 2 मंथ हैं आपकी MDCAT की एग्ज़ाम में। ओके सो आई मीन अक्टूबर की 5th तारीख को जो है आपकी MDCAT का एग्ज़ाम लिया जाएगा आप सभी से। ओके जो भी आई मीन इसमें अपीयर होना चाहता है, आगे अपनी जो है स्टडी को कंटिन्यू रखना चाहता है एज अ मेडिकल पर्पस। ओके सो उनके लिए मैंने जो है काफ़ी सारे लेक्चर्स पहले भी अपलोड किए हैं। आई मीन कुछ पास्ट पेपर्स थे जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखते थे, जैसे कि आपके लिए जो है काफ़ी आपकी जो है हेल्प हो रही थी। सो इसीलिए हमने पहले भी आई मीन ऐसा कहूँ कि पिछले ईयर्स आई मीन 2024 जो MDCAT हुआ था उसके बाद इट मीन्स पहले ही उसकी जो है टेस्ट जो थी उसका पेपर जो लीक आउट हुआ था एंड उसके बाद जो है फिर उसका रिकंडक्ट हुआ एग्ज़ाम जो IBS अखर वालों ने लिया था। ओके सो उनके लिए भी मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट की हेल्प की थी। आई मीन काफ़ी सारे जो है उसके पिछले ईयर से आई मीन 2020 में सॉरी 2024 में जो टेस्ट होने जा रहा था, सो उसके अकॉर्डिंग जो 2-3-5 साल आई मीन ऐसे कहूँ कि 23 ईयर्स के पहले जो ईयर्स में MDCAT का एग्ज़ाम हुआ था जो IBA वालों ने लिया था सिंध की बात करूं मैं IBA की। सो 2-3 बार लिया था। 1989 में भी लिया था, 1989 एंड 2000 में, 2021 एंड 2020 आई मीन 2001 एंड 2002 में भी IBA सखर आई मीन IBA कराची ने जो है एग्ज़ाम कंडक्ट किया था। सो उसके लिए जो 2024 में MDCAT हुआ आई मीन रिकंडक्ट, तो उसके अकॉर्डिंग भी मैंने काफ़ी स्टूडेंट की हेल्प की। ओके सो वो भी मेरे पास्ट पेपर पड़े हुए हैं। अगर आपको इट मीन्स आपको एक नीड है तो आप वहाँ से भी जो है अपना सिलेबस को कंटिन्यू कर सकते हैं, अपने सिलेबस को एज अ स्टार्ट कर सकते हैं एज इट मीन्स ऐसे कहूँ कि आपको वो बहुत हेल्प देगा। ओके सो उसके अकॉर्डिंग में हमने जो है अभी जा रहे हैं फिज़िक्स के पोर्शन पे जो 2012 का जो है पास पेपर है DUHS एंड JSMU का। सो उन्होंने जो है सिंध में और उसके बाद ओवरऑल हम बात करें कि पाकिस्तान में एग्ज़ाम लिया था। ओके सो काफ़ी इट मीन्स ये जो दोनों हैं बेसिकली ये सिंध से बिलोंग करते हैं, सिंध में ही इसका मेन रोल होता है। ओके सो उसके बाद हम फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट MCQs की तरफ चलने से पहले मेरी सभी से जो भी इट मीन्स न्यू स्टूडेंट हैं अभी मेरे चैनल को ज्वाइन इट मीन्स किया है और बट उसको सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक एंड शेयर नहीं किया, तो मेरी आप न्यू स्टूडेंट के लिए हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि आप सब जो हैं सब्सक्राइब करें माय चैनल एंड इट्स लाइक एंड विद शेयर। ओके सो उसके बाद आपको बहुत जो है हेल्प महसूस होगी। इट मीन्स आपको दिक्कत नहीं होगी, आगे न्यू लेक्चर जो है अपलोड हो जाएंगे तो आपके
की तरफ पहुंचने से। ओके, तो आपको जो है अपने घर बैठे हुए आपको वो लेक्चर मिल सकता है। अगर एक सब्सक्राइब आपको जो है किसी को देना आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंस रखता है, तो बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंस होगी। ओके, इट मीन्स आपको सिलेबस में हेल्प आउट होगी। ओके, सो ये बातें थी कुछ इसके लिए, और उसके बाद हम अपने सिलेबस पे आते हैं। ओके, सो फिजिक्स का पोर्शन हम अभी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द first MCQs, he says the, and we are going to start first MCQs. Identify the example of static equilibrium. जो हमारे पास static equilibrium में हम example देते हैं, such as this is the book lying in a horizontal table. ओके, तो ये बिल्कुल ठीक कह रहा है कि जो बुक है lying on a horizontal table, this is the correct. Another MCQ, building. Okay, another number three, birds. Okay, so I think bridge वो भी equilibrium state के हिसाब से ठीक है. This is the good example. And number second, building. This is the very static equilibrium. This is the relative in the static equilibrium. So I mean it's three or the correct, in which 1, 2, and 3. These are the correct option according to static equilibrium. Okay, another number 2, the mass of the earth on the basis of Newton's law of gravitation is given by m equal to 5.9 into 10 raised 24 kg. Okay, another number 3, the fusion of fusion reaction are associated with the nuclear energy, not water or physical energy, and geothermal energy, and another the fossil fuel energy. These are the not associated with the fusion of fission reaction. Okay, so only the reaction as an energy is associated with the fusion of fission reaction. This is the nuclear energy. Okay. Another number 4, what is the change in a gravitational potential energy when 7,000 Newton elevator moves from street level to the top of building 300 meter above the street level. This is the correct option is D, 2.1 into 10 raised to 6. Okay, another number 5, that a body of mass 0.025 kg attached to a spring is displaced through 0.1 meter to the right of the equilibrium position. The spring constant is a 0.4 Newton per meter, and its velocity at the end of its displacement is a 0.4 meter per second, and then its total energy will be 4 into 10 raised minus 3. Okay. Another number 6, says that the unit of luminous intensity, this is the Candle law, and the mole is a knot of the luminous intensity, and another ampere, and this is the unit of current, and hertz, and this is the in which unit of luminous intensity is the unit of Candle law. Okay. Number 7, if I into 2i plus 3j and minus k, b equal 4i plus 2j and minus 2k, find a vector x and a pillar to a, but has a magnitude of b. The now correct option is a. Okay. Another MCQ is in a past paper. If 3, if a equal to 3i plus 6j minus 2k, and then the unit vector parallel to a will be d, or k, sorry, b, 3 upon 7 I plus 6 upon 7j, and minus 2 upon 7k. This is the correct option. Is a very relative to the past paper, and most of the repeated. It was the most of the repeated MCQ in 2020
and 2021 and 2022. This was the very repeated MCQ in Mdcat and conducted by the PMDC. Okay, so please the focus it at MCQs number 8. Another number 9, if v equal to lemma delta or upon delta t, then the v will be instantaneous velocity. Okay, another number 10, a ball is thrown vertically upward with the velocity of 98 meter per second. How high does the ball rise? So this is the correct option is D, 490 meter. Okay, another number 11th, a particle is a projected and at an angle of 45 degree. Okay, please focus it. A particle is projected at an angle of 45 with the velocity of 9.8 meter per second. The horizontal range will be c 9.8 meter per second. Okay, 9.8 meter. Another number 12, 1 radian equal to degree. This is the correct option. 57.3 is the equal to 1 radian, not other the 2, 3, 4, 5 radian. So only 1 radian equal to 57.3 radian degree. Okay, so he was the most repeated MCQ in 2023 and 2024. Okay, so please focus. Another number 13, if L equal to R into P and our position vector P linear momentum, and then L in the equilibrium equation will be, this is the angular momentum. Okay, and not other the current and displacement, length and torque. So only equation will be the angular momentum. Okay, number 14, the superposition of two light wave is called interference. Okay, interference. This is the superposition of the two light waves, not the superposition of one light wave and three light waves. So on other and other the other points. So only say superposition of two light wave are called as interference. Another 15, a convex length of focal length 20 centimeter is used to form an erect image which is twist at the large at the object. The position of the object will be 10 centimeter from the lens. Okay, so आपने अभी तक मेरे चैनल पे जो भी न्यू है जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें ताकि जो भी आने वाली न्यू अपडेट हो तो आपको बड़े टाइम पे आपको मिल सके. ओके ओके another number 16. Okay, number 16, a system absorb 1000 joules of heat and delivers 6 joules of work. Please focus. While lose 100 joules of heat by conduction to the atmosphere, the change of the internal energy of the system will be 300 joules. This is the correct option. Okay, another point, it means 17 MCQ dash is the device which make use of mutual induction for stepping up and down in the alternative EMF electromotive force. This is the transformer. Another number 18, in a circuit there is a current of 5 MP which is changed such as the current falls to the zero in 0.1 second if an average EMF of 200 volts is induced. The self inductance of the circuit will be 4 henries, not 5 henries, not 6, 8, 7, only 4 henries.
And 19, the instruments is which work on the principle of Wheatstone bridge is a meter bridge. This is correct. The post office box, this is correct. So meter box is related to the post of box, and another name post of the box is a cylinder, another name is a carry foster or bridge. So this is the correct option is all of the above. Okay, do you understand? Okay. Another point 20, yeah, an ionometer varies up and 1a, its internal resistance is 0.81 sigma, and to increase the range of 10 ampere, the value of the required shunt is 0.09 sigma. Okay, another point number 21, electromagnetic waves are the produce motion of electric and magnetic field. So electromagnetic waves जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स को, नॉट चार्ज लेस पार्टिकल एंड एनर्जी static changing charging and heat, none of the above. So only electromagnetic waves, this is the produced from motion of the electric and magnetic field. Do you understand? Okay, 22. The energy of an X-ray quantum of wavelength 1.0 into 10 raised minus 10 meter is 1.99 into 10 raised minus 15 joules. The shortest wavelength per photon emitted in Bellamar series is 3 100 for 64.6 nanometer. Okay, another 24, the remove huge amount of heat energy in nuclear reactor is or used as a coolnet. Okay, another 25. Okay, so 25, the half-life of C14 is about 5,730 years. Didi is the half-life of C14. Okay. Another 26, the equation. Sorry. Okay. 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 24, 25, 26. Okay. Another 27. Two capacitor C1 and equal to 3 microfarad and C2 equal to 6 microfarad. Okay, C1 equal to 3 microfarad and C2 equal to 6 microfarad are in series across a 19 volts DC supply. The total capacitance is given 2 microfarad. Okay, so हमें C1 and C2 जो होता है वो C1 इक्वल होता है 3 माइक्रोफ्रॉड एंड 6 माइक्रोफ्रॉड C2 जो ये क्रॉस करते हैं 19 वोल्ट्स को. सो DC सप्लाई किया जाता है. सो टोटल इसमें जो कैपेसिटेंस बनती है वो हमें दी जाती है. इट मींस गिवन होती है 2 माइक्रोफ्रॉड, नॉट अदर दी 19 और 9 10 5 माइक्रोफ्रॉड. ओके, another 28 kinetic energy of charged particle decreases by 10 joules as it moves from the point as a potential 100 volt to 200 volt. The charge on the particles is 10 raised minus C1 gram. Okay, sorry, carbon. And 29, a 100 watts bulb. 100 watts bulb is operated by 240 volts. The current through the bulb will be 0.416 ampere. Okay, and the last MCQ of post paper of physics 2012 conducted from this exam, the PMDC and the DUHS and JSMU. Okay, and Sindh. A bulb having a resistance of 150 sigma is connected to the 225 volt source. The current in the bulb will be 1.5 ampere. Okay, so
ये थे कुछ एमसीक्यू जिनकी हमने आज जो है के बेस फेस है हमने आपको ये सॉल्व करवाए, जो बेसिकली 2025 में इट मींस जो भी 2012 में आ चुके हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी कुछ इनमें से न्यू एमसीक्यूज थे जो बार मोस्ट रिपीटेड हुए हैं। काफ़ी सारे एमसीक्यूज थे जो दोबारा इट मींस 2012 के बाद जो भी एग्ज़ाम हुआ है 2020 में, 2021, 2, 3 एंड 4, सो काफ़ी सारे एमसीक्यूज जो थे वो रिपीटेड हुए थे। सो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक एंड शेयर नहीं किया, तो हम रिक्वेस्ट आपके साथ के सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, ताकि जो भी आने वाली न्यू अपडेट हो वो आपको बड़े टाइम पे अपने जो है तरीके से आपके घर बैठे हुए आपको मिल सके। ओके, और उसके बाद में जो ये पीडीएफ आपको पढ़ा रहा हूँ और ये एमसीक्यू जो सॉल्व करवाए हैं, सो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भेज दूंगा। सो आप वहाँ से जो है उसके व्हाट्सएप चैनल है मेरा, सो उस पर आकर जो है ये पीडीएफ जो है अपना डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, सो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। ओके।